this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. As a responsible member of the international community, Pakistan upholds the principles and purposes of the UN Charter, including territorial integrity and sovereignty of member states. Guided by these principles and in exercise of our legitimate rights within international law, Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. The Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. At the WEF, Prime Minister participated in the informal gathering of the World Economic Leaders and delivered keynote address at an event titled Trade, Tech's Trillion-Dollar Promise, and held meetings with participating leaders on the sidelines. Foreign Minister Jalil Abbas Gilani is in Kampala, Uganda, to participate in the 19th Summit of the Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement and the 3rd South Summit of the Group of 77 in China. His participation in these important summits is a reflection of the high priority Pakistan attaches to promoting cooperation among the Global South, including on issues related to sustainable development. The Foreign Minister has also cut short his visit in light of the recent developments. The 14th of January marks a painful milestone for the human conscience. It was the 100th day of Israel's war in Palestine, which has taken over 24,000 lives in Gaza, a toll that is escalating with each passing day. The staggering number includes almost 10,000 children and over 6,700 women. The indiscriminate violence by Israel has to end. Humanity must prevail. The international community should play its part in saving the people of Palestine from the barbaric acts of the occupation authorities. The month of January carries painful memories of 3 massacres committed by the Indian forces in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir during the 1990s. Over 50 innocent people were martyred and hundreds were injured when Indian troops had opened indiscriminate fire on peaceful protesters in Gaukadal area of Srinagar on 21st of January 1990. A few days later, on the 25th of January 1990, at least 21 unarmed Kashmiris were martyred by the Indian troops in North Kashmir's Handwara town. On 27th January 1994, a day after India's Republic Day, Indian troops massacred 27 civilians in Kupwara town. We remember the martyrs of these massacres and pay rich tributes to their sacrifices. The perpetrators of these massacres should be held accountable. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. I thank you.
तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ऐसे वक्त में अहम उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि जवाबी हमला किया गया और ईरान के किसी शहरी या फौजी तंसीबात को इसके नतीजे में निशाना नहीं बनाया गया। हम पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। And we won't have a lot of time for our briefing. So I would request all of you to have one question when you ask this question. Please don't repeat a question which somebody else has asked so that we can cover more people. If you have more than one question, then it would be my prerogative to answer the questions that I like. So with that, let's start with इससे शुरू करते हैं। हाँ जी, खालिद साहब से शुरू करते हैं आज। मैडम, दोबारा से ईरानी फोर्सेस जो हैं वो तैयारी कर रही हैं और इतलात यही हैं कि उन्होंने दोबारा से मिसाइल जो हैं वो रेडी की है। अगर वो इस तरह की दोबारा ये करते हैं, हरकत करते हैं, तो क्या पाकिस्तान उसका जो फ़ौरन वही जवाब देगा जो पहले आज दिया है? I would not like to indulge in speculation. Pakistan has said that we would like to have peaceful relations with all countries in the region, including with our neighbor Iran. And we have also said that Pakistan's security and sovereignty is sacrosanct, and Pakistan remains ready and is willing to protect itself. हाँ जी, एक सवाल। Thank you, ma'am. As there was an earlier statement made by you that Pakistan carried out strikes, would you like to share details of these strikes, whether it was through regular Pakistan Air Force or through drones or missiles, and what are the details of casualties? Thank you. It is my understanding that these details will be coming soon from ISPR, so I will not indulge in operational details. Ji Azad sahab. Irani state media has recently reported that they have also sought explanation from Pakistan, although they have attacked it first and we have retaliated. But the state media is saying that they have sought some kind of explanation from Pakistan. Have you received any kind of communication from Iran? As you know, this incident took place this morning, and at this point I'm not aware of any contact that took place in the last 2-3 hours. Yes, our friend from Irna. Salazar from Iranian Eastern Youth. Ma'am, there are some reports regarding some countries trying to de-escalate the tension between two brotherly countries. Is there any? Thank you very much. As I said earlier, Pakistan considers the people of Iran as our friends and brothers, and we have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this, and we also believe that acts like the one which took place a couple of nights ago create difficulties and give the adversaries of our friendship the pretext to create more difficulties in the region. Ali Hussain. Thank you, ma'am. Ali Hussain from Business Recorder. Iran violated Pakistan's sovereignty and carried out strikes inside Pakistan, and Pakistan in response retaliated and carried out the same strikes inside Iran. What next? Is there any channel of communications between the two countries currently to de-escalate the situation, or where both the countries are heading toward? Thank you.
As I said earlier, Pakistan has also always emphasized dialogue and cooperation, and we have always chosen a path of dialogue. We also believe that dialogue and cooperation is essential for confronting common challenges, including the menace of terrorism. And we would like to continue to engage with our neighbors to combat this menace and to ensure that peace prevails and sorry मैं तो सवाल क्या मैंने क्या कहा We will continue to engage with our neighbors including Iran. We are talking about Iran with our neighbor Iran. Okay, आपने इंटरप्ट ही कर दिया मुझे हैं. We will continue to engage with our neighbor Iran to ensure that peace prevails and there is and that the two countries make concerted and coordinated efforts to combat the threat of terrorism. Ji Anas. Thank you so much, ma'am. Has there been any efforts for a third-party mediation by regional stakeholders? And if so, what is Pakistan's response? Any countries that you would want to mention if there has been an effort at all? Thank you. I am not aware of third-party mediation, as you mentioned. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point, I am not aware of any third party stepping forward in this context. China has urged restraint, asking Pakistan and Iran to exercise strain. Has China approached Pakistan and Iran for any mediation? Because China is a very close friend of both Pakistan and Iran. And earlier they also mediated to escalate the situation between Saudi Arabia and Iran. What are your comments, please? As I just said, I am not aware of any mediation by any third party that has taken place or is on the horizon. हाँ जी रास्ता को दें. थैंक यू सो मच मैम. ये बता दीजिए कि ये जो ऑपरेशन समाचार था इसमें बीएलए और बीएलएफ के हाइडआउट्स को टारगेट किया गया या नहीं? Again on this question, please wait for an advice from ISPR which will be coming shortly. हाँ जी निज़ामी साहब को. थैंक यू मैडम. मैडम हमने बर्ग अमेरिका सुना, बर्ग इजराइल सुना, एक नई आपने नाम दिया है बर्ग शर्मचार. इसकी कोई ख़ास वजह है? ये फारसी में मैसेज दिया गया है. इंटरेस्टिंग नेम है. I am not an expert in Persian language, so I cannot comment on its how interesting it is. But this is a code name, which is, as you know, it was an intelligence-based operation, and our military authorities and ISPR would be better positioned to respond to this question. हाँ जी, मैडम को दें. That already been established? How have their identities been established already? Pakistan for the last several months and years have been in contact with Iran authorities, and we have shared with them concrete evidence of the presence of
these terrorist hideouts inside Iran. And that is why we are very confident of the statement that we have made. For further details, please wait for an advice from ISPR. Ji, Sumaira. तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच अहम प्रेस ब्रीफिंग दे रही हैं मीडिया को। उनकी जानिब से कहा गया कि आज की कार्रवाई पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर की गई थी। पाकिस्तान की किसी शहरी की ख़ुद मुख्तारी के ऊपर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान कभी भी कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। बातचीत के दरवाजे पाकिस्तान की तरफ से हमेशा खुले रहेंगे। पाकिस्तान ईरान से बरादराना ताल्लुकात कायम करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी का भी एहतराम करता है। पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई उसके नतीजे में किसी सिविलियन को या फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। आज की कार्रवाई का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करना था। मैं अफवाहों पर तबसरा नहीं करना चाहती। पाकिस्तान ईरान से बरादराना ताल्लुकात कायम करना चाहता है। इससे पहले भी पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन बात जब खुद मुख्तारी की पाकिस्तान की आ जाएगी, सलामती की आ जाएगी, तो पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और पाकिस्तान की तरफ से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। पाकिस्तान के ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में BLA-BLF के अहम रहनुमा जो कि बलूचिस्तान के अंदर अपनी फैमिलीज के साथ ईरान के अंदर रिहाइश पजीर थे, सिस्तान के अंदर उनको निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम भी वासिल हो चुके हैं। लेकिन इस सारे ऑपरेशन के नतीजे में ईरान की किसी भी सिविलियन आबादी को या फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान कभी भी कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ईरान हमारा पड़ोसी बरादर मुल्क है। ईरान के साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और जो निगरान वजीर खारजा हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। दोनों ने अपने दौरे को मुख्तसर करके आज रात को वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो कि डियोस के अंदर मौजूद हैं, अहम जो फाइनेंशियल समिट हो रही है उसके अंदर उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने भी अपने दौरे को जो है वो मुख्तसर कर दिया और आज रात को वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो निगरान वजीर खारजा हैं जलील अब्बास शीलानी, वो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं समिट में शिरकत के लिए। उन्होंने भी अपने दौरे को मुख्तसर कर लिया है और वो भी आज शाम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के सवाल से कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते जो है वो मुख्तलिफ तरह से राब्ते होते रहते हैं, लेकिन अब तक किसी मुल्क ने सालसी के लिए राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हमें सूरत-ए-हाल मजीद खराब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए होती रहती है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच अहम ब्रीफिंग दे रही थी, क्योंकि आरसो पाकिस्तान की जानिब से ईरान के सूबे सिस्तान जो कि ईरान बॉर्डर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है उसको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जहाँ पे BLA और BLF के अहम सरगना और उनकी फैमिली रहायश पजीर हैं, बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने के लिए ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से सिस्तान के ईरान का जो सूबा है सिस्तान उसको निशाना बनाया गया और BLA के और दहशत गर्दों के जो अहम ठिकाने थे उनको ख़त्म कर दिया गया और कई दहशत गर्द इसके नतीजे में हलाक भी हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच मीडिया ब्रीफिंग भी दे रही हैं। उनकी जानिब से सारी तफसीलात पेश की गई और कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। पाकिस्तान ने हमेशा से दरवाजे खुले रखे हैं मुज़ाकरात के लिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। ईरान हमारा बरादर मुल्क है, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं और पाकिस्तान कभी भी अपने बॉर्डर्स पर कशीदगी नहीं चाहता। अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ किसी किस्म के हालात ख़राब करने में दिलचस्पी नहीं रखता। ISPR भी कुछ देर इस हवाले से मालूमात भी शेयर करेगा कि कितने अफराद हलाक किए गए ईरान के अंदर और इस ऑपरेशन को किस तरह पाए तकमील तक पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन के हवाले से आपको बताएं कि ईरान में पाकिस्तान के जो सफीर थे मुदस्सिर टीपू वो इस वक्त पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं, जबकि ईरान के सफीर को भी कल पाकिस्तान से मुल्क बदर होने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। पाकिस्तान के ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया गया।